government and politics section, which is almost like general studies. The next paper comprised of section A means you will have comparative politics and international politics, basically global politics, and section B is about India and the world. Right now, focus on what we are going to do. Go with the flow of the class. For political science, at least the way I teach, it is going to be very integrated, means it will be difficult for you to understand if you will miss the class. For any reason you miss the class, I think many of you also are part of that tablet 1250 program. So make sure that you watch, because in political science, we don't know, something that we study now may be utilized when you do the last chapter of India and the world. Fine. And the next thing is, don't panic for anything. Okay. So yesterday, if some of you have attended my essay class, I discussed that brilliant things happen in calm mind. Okay. So stay calm, be open to learn, and we do things good only when we enjoy it. So my class is, I believe it should not be a burden. It should be the place where you come and you relax. And political philosophy is one such thing, which is, I believe that is going to give you not just information, but also a lot of relaxation. And at this point of time, all of us face some or the other problem related to our lives, etc. We go to the doctors, we go to the psychologist, but I believe that there is no better medicine than the political philosophy itself. And just open for learning. And the way I will be teaching is going to be very different from what you have been doing up till now, because there is a big difference in the university exams and UPSC exam. And UPSC exam is not about collection of information. I hope you understand the difference between the information, knowledge, and wisdom. Okay. So information is when things are very superficial. It is about collecting certain information, facts. Knowledge is when you also understand, when you can put your facts in a perspective. And ultimately, what matters is not your theoretical knowledge, but what you are able to write on the paper. Because the only way examiner can understand you is through what you are going to write. And you can write only when you understand the things. So focus should be on understanding of the subject. No unnecessary worries in the sense running after newspapers, running after material. Just focus on the class. And in the class, don't come just to take the notes, because in UPSC, you will have to study so much, and literally, you are not going to get the time to revise further. This is like initially, maybe for a week, you will get time to revise because content is going to be less. But as you will move on further, as content will keep on increasing, and the three components, your optional, your GS, and the current, you will start feeling lost, you will start feeling demotivated. So this exam is all about personality, how you are going to overcome these type of weaknesses, and just understand that the information is a very limited part of this exam. It is all about what you are going to do with that information. Okay. So how many of you have never studied political science or humanities earlier?
Okay. So don't consider any problem. You will have to just make certain adjustments in the humanities, in the world of humanities. So humanities is what? It is very subjective in nature. In humanities, there is no right answer, no wrong answer. It is all about arguments and counter arguments. And in case you feel any need for further understanding and all, feel free. We are here to help you. And rest of you are from political science. Fine, that is a bigger problem. Those who are not having political science is a big relief because they can start fresh. But those who have studied political science, and the way you study, there is always lot of confusion. So it's going to be a challenging class for me. Fine. So today I will start with the Western political thought. And whenever you do, you should understand why we are doing Western political thought, what is its significance. And regarding notes, I always recommend if you make notes on the loose sheets, because later on, if you want to add something, you can do that. Or otherwise, after one topic is complete, leave some pages. And if you can use different colors pen, this will help you in revision, because lot of the discussion is conceptual, and concept either you will understand or not understand. So concept will not be required to revise. What you have to revise is certain facts. What type of facts will come in political science theory portion? The name of the thinkers, the books and the concepts. What type of facts will come in international relations? Maybe certain data and again name of scholars. So if you use different types of pen before going to the exam, if you want to just revise the data, you just want to revise the scholars, you want to revise the concepts, it will make the things convenient. And after the class, do mental revision. Try to recollect what all you have learned in the class, because literally it will not be possible for you to revive the things later. If you want to make short notes, you can start from now, and I will tell you what should be the part of the short notes in the Western political thought. Okay, so now I will be starting with the Western political thought. So why I am starting with Western political thought? Why not other topics? Okay. So first of all, understand the significance of this. Okay. Why we study political thought. Okay. So first of all, and again, when I tell you to write, then write. Rest of the time, try to focus on what I am saying. So first thing you write, significance. Why to study Western political thought? So significance is that it is a foundation of the subject. So when you make a building, what takes the maximum time? Foundation. Fine. So here also we will be building your foundation, and on this foundation the entire political science is based. Now when I say foundation of the subject, what will comprise of that? What is like, just like foundation of the building,
you require bricks, you require cement, you require water. So for the foundation of political science, or for that matter, what constitute the foundation of any subject? You understand, मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन है, लेकिन आपने भी इतना ही सुना पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन है, दिस इज इंफॉर्मेशन. बट डू यू अंडरस्टैंड दैट इन व्हाट सेंस पॉलिटिकल थॉट इज अ फाउंडेशन? कैन यू डिफाइन, कैन यू टेल? किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्या होता है? Okay. Now, in general, whenever you study something, first thing is you have to understand the language of the subject. Fine. So, when you study political science, you come across the words like socialism, like liberalism, individualism. Fine. So until and unless you do not understand the meaning of these terms, you cannot go further into the subject. So foundation of the subject, always start thinking that you should have one line answer for every question, and it should be very precise. Fine. So if asked foundation of the subject, what does that mean? So foundation of the subject means language of the subject. Like alphabets. Fine. So understanding the language of the subject. Is that clear? अगर आप थॉट नहीं पढ़ेंगे तो आप सब्जेक्ट में कुछ बोल नहीं पाएंगे. ओके, सो लैंग्वेज. नाउ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? लैंग्वेज has certain terms. लैंग्वेज में टर्म्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू यूज द टर्म लाइक वाटर, यू यूज द टर्म स्टेट, सॉवरेनिटी. तो लैंग्वेज का मतलब होता है टर्म्स. बट टर्म्स आर सिंबल्स, and the terms are based on what? Concepts. So the basic concepts of political science are based on political thought. And in political thought, what you study? The language of the subject, means the terms socialism, democracy, power, state, republicanism, all such things. And terms in themselves cannot symbolize anything. So at the base of the term is the concepts. So that is the importance of the Western political thought. Is that clear? So how critical it will be for the rest part of your subject. Okay. Now it is very essential that you understand the meaning of each and every word that you talk, because then only you can use that word in the right place and in the right manner. Using things in the right place and in the right manner, what does that? Can you give any word for it? If things are at the right place, at the right time, in the right manner, can you think about one word for it? What? Perfection. Okay, so perfection. And if things are at the right place,
at the right time, things go well. Fine. So you can call it perfection, you can call it excellence, you can call virtue, you can also call justice, because that results into peace. Fine. That results into satisfaction. Okay. So each and every word is important. Here there are three words are there: Western political thought. Fine. If there is a Western political thought, there will also be non-Western political thought. So in your syllabus, there is also Indian political thought. So right now, we are not studying Indian, we are studying Western. So how Western differs from Indian, we will understand only when we will do Indian. So right now, there is no need to inquire too much into the word Western. And if you see the syllabus of this unit, it includes all Western philosophers from Plato to Hannah Arendt. So right now, just forget this. Okay? Just understand these two terms, political and thought. And we should have capacity to define what is political. In interview also, your interview preparation should start from now itself. They can ask you, what is political thought? What is political science? And how political thought is differentiated from economic thought. Fine. So the first challenge of yours is that you should be able to define what is political. Okay. So now let us understand, so that we understand the boundary. Means we should not intrude into geographical thought, economic thought, though political science is a very interdisciplinary subject, and that is why it is called master science. Okay, but still we have to define political. What is political? What is the subject matter of the political thought? Is that clear? So in your copies, write defining political. Defining political. And simpler you will keep the things, better it is. Fine. So what is political? From where this term originated? Most of you must be knowing. So when you define certain term, political is a term, and we have to understand the concept behind. Okay. So what we do, we go for etymological origin. Of the term. Okay. You understand etymology? Etymology means from where this word has come into existence. Jaise justice. The term justice comes from jas. Dharma comes from Sanskrit dhatu dra. Fine. So etymological origin, how this word came into existence. Fine. So you can write that the term political comes from the Greek word polis, representing city state. City states. So we have variety of states
One variety is city state. Right now we have nation state. So this city is not important now. Now we use political only for the state. Okay? So you have written city state oblique state. State. So polis is a Greek word for state. And where is the origin of the subject? In ancient Greece. What type of subject political science is? Political science is Eurocentric discipline. Do you understand Eurocentric? So the term Eurocentric is first used by a scholar named Edward Said. Don't write anything where it will be required then. So what does Eurocentrism means? Eurocentrism analyzes these subjects, this knowledge, and whatever knowledge in political science exists, it is based on the experience of Europe. It is based on the history of Europe. Is that clear? So the terminology which we are using in political science, they are European or they are Western in origin. And that is why we call it Western political thought. We will not understand politics through our experience, our history, our terminologies. Rather, we will experience it through the Western concepts. So, what is the nature of the subject? Eurocentric. The definitions are Western definitions, Eurocentric definitions. The terms are Eurocentric terms. For example, we use the term nation. Fine, we don't use the term Rashtra. Why we don't use the term Rashtra? Because we don't know what is its meaning. Fine, and why we do not know the meaning? Because we don't know anything about ourselves. Do we know about ourselves? Do we know our history? No. Fine. Because we are the people living in colonies. And what the colonial masters have done, they have destroyed history and they have reconstructed the history. Fine. So if you see the Western history and periodization of the history in the West, they classify as ancient, medieval, modern. Find a very neutral terms. But when they talk about when the colonial masters have written the history of India, they have written the Hindu period, the Muslim period, and the British or the modern period. They don't write it as a Christian period. Okay, so there is lot of politics also in the theory of political science, and we have to be very careful. Okay, so knowledge has always been a means to exercise power, and this is what we will be looking at it. So I am not going to complicate it further, just keep it simple that the term political science or political comes from the Greek word polis, and polis means state. Okay, so what is the central subject here? State. Is that clear? तो ऐसे लिखो ऐसे, what is the central subject of political science? How do you define the subject? So you can quote one thinker or scholar, Gardner. Garner.
right? He defines political science as a subject which begins and ends with the state. Okay. So what is the subject matter of economics? Market. What is the subject matter of political science? State. It begins and ends with the state. Fine. So when you talk about a state, there may be certain terms like government, like authority, like power. So these are the things, and political theories are about state, governance, power, authority, legitimacy. This is going to be our subject matter. Is that clear? So, Western political thought means we are trying to understand how the people in the West have understood politics, political concepts, political institutions. And it is very important for the people in the East to understand the West, because the institutions which we are having today, they are borrowed from the West. Is that clear? Our terminologies, our language, everything is Western. Fine. For example, Indian Constitution is borrowed from British Constitution, from American Constitution. Fine. So even if we have to understand ourselves, we do not understand through our language, because our language is not clear. Nobody in India understands Vedic Sanskrit that somebody can explain what exactly is dharma, what exactly is caste. So we have to understand these terms through the Western terminologies only. Is that clear? So political science is about state, governance, power, and all such related things. Now, you should also understand what is thought. How do we define thought? So, why I am not using the term theory? Why I am not using the term philosophy? So, what is the difference between political thought, political philosophy, political science, political ideology? Fine. So, you should have a clarity of this term. ठीक है, तो अब लिखते हैं, या एक ऐसे लिखो, डिफरेंशिएट अमंग द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, तो साथ में ही लिखेंगे और साथ ही में एक्सप्लेनेशन लिखते रहें. तो सबसे पहले लिखो पॉलिटिकल थॉट. What exactly is political thought? So if you want to explain to someone what is political thought, you can just write that. Point number 1, it is a foundation of the subject. Okay. So if you want to understand the terminology of the subject, what will you study? Thought. Okay. Next point, it provides the language to the subject. So we will come further on the thought later. Right now, let us understand some other terms. Okay. So now next term you can write political theory. You understand the term theory? Every person has a theory. ठीक है.
आपकी कोई थ्योरी है? आपकी लाइफ की कोई थ्योरी है? Can you lead your life without a theory? All of you have a theory, but what is that? Can you define theory? Or you are leading your life without theory? What is your theory? Theory is certain assumptions on the basis of which you are leading your life. For example, your theory may be that if you will study political science with me, you may pass the exam. So what is this theory? It is set of assumptions. Fine. And can you survive without theory? Even for getting up from your bed, you need a theory. Fine. For brushing your teeth, you need a theory, because you should know why are you brushing the teeth. Is that clear? And the origin of the theory is in the intellectual curiosity of man. Fine. So humans have to think and act. And what happens is, when we keep on acting, we don't need to think. But none of human action can be without thinking or without theory. We need theory for everything. Okay. So theory term, what exactly is the theory? So when you do something, your mind asks certain questions. Fine. Why should I get up in the morning? Why should I brush my teeth? This mind is asking the question, and you should have an explanation for it. Okay. So what is a theory? It is a set of assumptions. Why I am using the term assumptions? Because maybe we are wrong. We have been living with many wrong theories also. Is that clear? So a theory can also be proven wrong. It can also get falsified. So the term for theory is now assumption. And if theory is not proven wrong, rather it gets proven established again and again, then it becomes law. Is that clear? So now what exactly is theory, and what is the function of theory? What is the function of theory? Explanation. Okay. To satisfy our intellectual curiosity. So in political theory, we want to know why state exists. What is its purpose? Because if we do not have a clarity over that, we may not tend to study it. Is that clear? So you can explain theory? Fine. So theory is what? So first generic understanding, then related with politics, it becomes political theory. Fine. So theory, right, point number one, is a set of assumptions. Next, these assumptions are essential for humans to understand the world around them. अगर आपके पास थियरीज नहीं होती तो आप क्या होते? कंफ्यूज्ड. ठीक है. टू अंडरस्टैंड द वर्ड. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थियरी इज explanation. So the purpose of the theory is to explain. Okay. Right. Next paragraph. Right. The political theory is about explanation of
the world of politics. ठीक है, अब जैसे लिखते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल, if we want to understand why Indians vote in the manner, why Indians vote or cast their vote in the manner they do, for example, the determinants of voting behavior of Indians is the phenomena of caste and religion. So why the role of caste in Indian politics? Why the role of religion in Indian politics? Is that clear? So what will be the explanation? So theory will provide the explanation. So what is the theory? Why we vote based on caste? Theory किस चीज का आंसर दे रही है? Why का. So you vote on the basis of religion, or you are a modern people who vote on the basis of some rational criteria, development. आप किसके लिए वोट करते हैं? डेवलपमेंट के लिए कि रिलीजन के लिए? सही में तो झूठ क्यों बोल रहे हो? यहाँ क्या है? मतलब यहाँ तो सच बोल सकते हैं. किस लिए वोट करते हैं आप? यू वोट फॉर योर कास्ट. यू कास्ट योर वोट और वोट फॉर योर कास्ट. कास्ट है ना. So Indians vote for their caste. It is said that Indians do not cast their vote, they vote their caste. Fine. So why do you vote for the caste? What is the explanation? Because caste is the way of life in India. Fine. So we will get lost if we do not know what is our caste. How will you marry? Fine. How will you decide whom to talk? Whom should you share a cup of coffee with? That. So our life revolves around religion and caste. Caste is the basic structure, the mosaic of Indian society. So even if consciously or unconsciously we will vote for our caste, we will vote for our religion, fine, because the voting or the politics cannot be separated from the social environment. So this is one theory. There can be endless theories. Fine. So the purpose of theory is to give explanations. Fine. So purpose of theory is to solve the why question. Is that clear? You have understood this? Now let us understand what type of theories are existing in political science. Okay. तो पहले लिखते हैं. किसी को थियोरी का पर्पस समझा लोगे? कॉजल एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो नाउ टाइप्स ऑफ थियोरीज इन पॉलिटिकल साइंस, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियोरीज इन पॉलिटिकल साइंस. Normative theories and empirical theories. So value based or data based. Is that clear? So normative theories are also called as philosophical theories. And
empirical theories are called scientific theories. Which theories will be more in number if the title of the subject is political science? What? Normative. तो साइंस का क्या? हाँ, पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मेटिव थियोरीज ज्यादा है. पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजर टू फिलोसफी और क्लोजर टू फिजिक्स? क्लोजर टू फिलोसफी. तो टाइटल में फिर ये साइंस का क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज what science there? No, but science का क्यों? Why not the title of the subject is political philosophy? Why political science? Laws are proven. Political laws are not proven. ठीक है, कुछ नहीं. देखो, या तो तुम्हें पता होता है या नहीं पता होता है ना? तो जब आप ये आंसर दे रहे हैं तो आपको क्या ये पता है कि आपको पता है? कम से कम एटलीस्ट यू शुड नो दैट यू डू नॉट नो. फाइन. So who is the wisest man? Socrates. Why is he called the wisest man? Because he knew that he knows nothing. Fine. But otherwise the rest were also not knowing anything, but they didn't know that they were not knowing anything. ठीक है. तो anyway, आपने क्या लिखा? फिलोसॉफिकल थियोरीज. यहां पे नीचे लिखो, इट इज मोर इन नंबर. मोर इन नंबर. ठीक है. यहीं पे एरो करके, मतलब समझने के लिए ऐसे लिखो पॉलिटिकल साइंस इज प्रीडोमिनेंटली philosophical in nature. ठीक है. As a subject, it also began as a branch of philosophy, fine, or a branch of ethics. Political science started as a branch of philosophy, which is known as ethics only. That is why there is so much close overlap between ethics, philosophy, and political science. So our subject is primarily dominated by political philosophy, though there are scientific theories, but there are limitations also. So in interview, they can ask you this very basic question. They always test the basics, that political science is dominated, or it is closer to science or philosophy. It is closer to philosophy. The moment you will give the right answer, they will give you another question. If it is closer to philosophy, then why political science? Okay. तो अब एक क्वेश्चन लिखो if political science is predominantly philosophical in nature, then why the title of the subject is political science? You have an answer? पहले खुद से पूछना है. Do I know an answer or I don't know? You have an answer? इतने सारे लोग तो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं और यही बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा तुमने कभी. Why political science is called political science? It's a difficult question. ठीक है, तो लिखो
अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछते हैं वाई पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट साइंस इनटू इट, व्हाट विल बी योर आंसर? ठीक है, तो पहला रूल होता है कभी किसी को आंसर देना ही नहीं। पहले स्माइल करना है तो वो अगर उसके बाद भी कहें स्माइल हो गई अब आंसर दे दो, है ना, तो आंसर देना नहीं होता है, क्योंकि आंसर जब हम देते हैं तो गलत ही देते हैं, ठीक है, और हम पकड़े जाते हैं। तो आंसर देना ही नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? another question or something which is irrelevant, ठीक है। and when you are not there in interview to give answers, you are there in interview for communication, ठीक है। तो if they ask you this question, why political science science, you can simply say, sir, this is the question, even I am searching the answer. And in fact, not me, so many people are searching this answer. When there is no science, how can politics be science? Politics is an art. Politics can be philosophy. Politics cannot be science. Is that clear? So you can simply say that, be a honest person, that this is the search even you are making. Fine. तो क्या बताओगे जैसे ही वो बोलेंगे दिस इज व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो हम आप क्या आंसर देंगे? वेरी गुड क्वेश्चन सर, द क्वेश्चन इज आई रियली अप्रिशिएट। फाइन, तो यही आंसर देना है। पॉलिटिक्स में कोई आंसर नहीं देता है कभी। पॉलिटिक्स सीखनी है और आंसर देना ही नहीं है। क्या करना है? सिर्फ एप्रिशिएट करना है सामने वाले को, ठीक है। एप्रिशिएट करोगे तो प्रमोट होते चले जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? वाई पॉलिटिकल साइंस इज साइंस। लिखो आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, यू राइट दैट अ $1,000,000 क्वेश्चन। यही तो $1,000,000 क्वेश्चन है। यही तो नहीं पता चला, कोई डिफाइन कर ले उसको $1,000,000 मिल जाएंगे, ठीक है। लिखो इसका आंसर, यही तो है। या यू राइट दैट इट्स अ $1,000,000 क्वेश्चन, ठीक है। इट्स नॉट सो इजी टू डिफाइन, ओके। तो ये जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है या नहीं पता है, गेस वर्क नहीं करना है, उस क्वेश्चन को कहना है सर दिस इज अ $1,000,000 क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट कि आप इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन, वरना बाहर मेरे फ्रेंड्स मिले थे बोर्ड के बाहर, वो कह रहे थे हमारे बोर्ड वाले बहुत बेकार बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन करके आना है, वहां कॉन्वर्सेशन करना है, ठीक है। तो अब $1,000,000 क्वेश्चन का मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू आंसर। सब जगह यही लिखना है, यू शुड नो हाउ टू टॉक। क्यों नहीं लिखना है? जीएस और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस? नहीं, सब जगह लिखना है, इट्स अ $1,000,000 क्वेश्चन, एवरीबडी टॉक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज कैसी होती है? स्पाइसी। यू हैव टू ब्रिंग स्पाइस। इज दैट क्लियर? तो चलो, $1,000,000 क्वेश्चन का मतलब क्या लिखो? लिखो डिफिकल्ट टू आंसर। किसी पॉलिटिशियन के पास कोई आंसर होता है कभी? और वो देते हैं तो क्या रिलायबल होता है? नहीं होता है ना। तो पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर नहीं। तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यू कैन कोट वन स्कॉलर। लिखो, in this context, we can refer to the views of Maitland, a scholar, Maitland. तो तुमको बात करनी आनी चाहिए। जैसे ही तुम बोलोगे $1,000,000, वो पूछेंगे ऐसा क्यों कहा आपने,
वो इंसान अपना प्राइमरी क्वेश्चन भूल जाएगा, है ना। फिर बात से बात निकलती है ना, वो बात कहीं और हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इंटरव्यू को डाइवर्ट करते हैं। तो यू शुड हैव अ वोकैबुलरी, व्हाट विल यू टॉक व्हेन यू विल टॉक। ठीक है, तो अब एक स्कॉलर है मेटलैंड, फाइन, इसका स्टेटमेंट लिखो। लिखो, व्हेन आई लुक एट अ क्वेश्चन पेपर with the title Political Science, comma, what troubles me is not the questions but the title। उसका सारा टाइम एग्जामिनेशन सेंटर में इसी में बर्बाद गया। ठीक है, कि ये टाइटल कैसे, इसमें साइंस क्या है। तो दिस इज हाउ यू टॉक इन पॉलिटिकल साइंस, डोंट टॉक डायरेक्टली। इज दैट क्लियर? तो प्रॉब्लम ये है कि बिगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दैट द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस। ओके, but there is a tradition to call it political science, and if somebody compels you to explain, you can say that in my point of view, political science or the term science should not be related with the natural sciences, and the term science comes from the Greek word episteme, and episteme means knowledge. So political science is called political science. It denotes a systematic knowledge of the world of politics. आ गया समझ में? चलो लिखो, राइट राइट, political science should not be understood as a science in the way we understand natural sciences. ठीक है, देखो, the term science comes from the Greek word episteme. Episteme, epistemology. In philosophy, science of या epistemology is theory of knowledge. ठीक है, episteme, okay, which means knowledge. So political science is a science in the sense it provides systematic knowledge about the political phenomena systematic knowledge about political phenomena. So is political science an experimental science? No, here we are just using this word for a systematic study. So up till now you understand the meaning of the term political theory, political science. Now let us understand political philosophy. ठीक है, so what is political philosophy? ठीक है,
तो अंडरलाइन करो philosophy. What is philosophy? And who is the father of philosophy? Socrates. So philosophy, फिर लिखो right. Philosophy comprised of the two words philo and Sophia. Philo means love. Sophia means knowledge. Knowledge. ठीक है? So philosophy is basically search for the deeper knowledge. Because until unless you don't love knowledge, you cannot go deep. Fine? So you see what is the difference between the science and philosophy. So science deals with the material world. Okay, to understand the difference, you have to understand the universe has two features, yeah, two characteristics. One, the material, and the other is spiritual. Just like our body have two parts, the material and the spiritual dimension. Fine. So the material dimension can be studied by observation, but beyond the world of matter also exists another world, and that is the world of spirit, the world of idea. Can you see spirit? Can you see soul? But can you deny the existence of soul? No. It means there is something beyond the world of matter. Okay. So the material world, have you written this? ठीक है. Material world को लिखिए world of appearances. जो appear होता है, दिखता है. World of appearances means which can be observed. So which word you can observe? लिखो physical world. So under which subject you study the physical world? Physics. Arrow करके लिखो the subject matter of physics. फिजिक्स से आप सब ऊपरी ऊपरी चीजें या मटेरियल चीजें देख सकते हैं. ठीक है. नाउ राइट फिलॉसफी या स्पिरिचुअल वर्ल्ड. लिखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बिहाइंड द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस. It is called world of ideas. Idea means concept. ठीक है. तो study of concepts is philosophy. Arrow करके लिखो the study of concepts is philosophy. Which is deeper knowledge? Philosophy, right? Philosophy is deeper knowledge. So which knowledge should be called knowledge? Physics or philosophy? Philosophy. ठीक है. Real word है. तो basically political philosophy is going to study
the political ideas, the political concepts, justice, rights, liberty, equality. So, what is political philosophy? The study of political ideas. What are political ideas? Rights, liberty, justice. Do you see justice or do you understand justice? Understand. So, it is the study of invisible and it is the study of visible. Fine. So here you can observe by your eyes, but here you will require reason. So going deeper. In fact, there can be no science without philosophy. And ultimately, the purpose of science is to verify the concepts only. Okay. So later on, we will see that this relationship is more complicated. It is not so easy the way I am trying to simplify. But for the time being, political philosophy means going deeper. You can go deeper only when you have interest into something, when you love something, when you have motivated. So if you have a love for true knowledge, if you have a love for deeper knowledge, you enter into the realm of philosophy. Can you understand political philosophy? शायद आप डिफाइन ना ही कर पाए, इसलिए लिख लीजिए अभी. लिखिए, राइट. लिखो, philosophy is the study of ideas, means concepts. Right? Philosophy goes beyond the world of appearances. Okay? Right? In political philosophy, we study political ideas or concepts like justice, liberty, equality. Okay? And political science is more to do with facts like voting behavior and other things. ठीक है? तो political philosophy, अब यहाँ पे लिखो much of political theory, much of the political theory is political philosophy only. So often these two words are used interchangeably. पॉलिटिकल थियोरी में हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल फिलॉसफी ही पढ़ेंगे. अब एक वर्ड है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ठीक है, तो आइडियोलॉजी क्या होता है? लिखो, राइट. लिखो, आइडियोलॉजी इज फॉर कंजम्पशन ऑफ मासेस. ठीक है, अब लिखो फिलॉसफी इज फॉर इंटेलेक्चुअल्स. जो इंटेलेक्चुअल्स का डिस्कशन होता है वो क्या होता है? फिलॉसफी. अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जिससे मासेस समझ जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी. तो why do we need to tell ideology to the masses? Why do we need to tell philosophy to the masses? Because in present times we are living in the age of mass democracies, because we require mobilization of masses. Fine.
So, the purpose of ideology is mobilization of masses. तो masses को masses के level पे जाके समझाना, masses की language में समझाना, जैसे Gandhi was trying to establish an ideal state in India, but instead of using the term ideal state, he had to use the term Ram Rajya. The people in India would not have responded to the call of Gandhi if Gandhi had been talking something like ideal state. But they can easily relate to Gandhi if we will talk about Ram Rajya. तो मासेस के साथ कैसे बोलना होता है? मासेस की लैंग्वेज में. मासेस का इन्वॉल्वमेंट क्यों है पॉलिटिक्स में? बिकॉज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मास डेमोक्रेसीज, नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसीज. तो मासेस को वोट देने के लिए निकालना पड़ेगा घर से. तो कोई भी मास वोट देने के लिए क्यों निकलेगा? उससे कहें कि डेवलपमेंट करना है, वो निकलेगा. उससे कहना है मंदिर बनाना है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा वो. ठीक है. लोग डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं करेंगे, लोग कास्ट के लिए करेंगे. इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें जब मासेस तक पहुंचाई जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी इज फॉर कंजम्पशन ऑफ मासेस. फॉर एग्जाम्पल, if I talk about Hinduism, it is philosophy. But when you take it into the masses, it becomes Hindutva. Fine. And what is the purpose? Mobilization of the people. Is this point clear? So, simplified, making it something for the mass consumption, because the purpose of ideology is politicization. It is called politicization of philosophy. So when philosophy gets politicized for the purpose of mobilization of masses, then it is called ideology. ठीक है? तो is Hindutva a political ideology? Fine. So you have to understand the difference. And who told this difference? We will study one philosopher, Gramsci. So Gramsci said philosophy is for intellectuals, but ideology is for masses. And he said that communism has to become the ideology of the working classes, otherwise they will not be relating themselves to the program of communism. Have you understood? So what is the difference between philosophy and ideology? Ideology is for consumption of masses और ideology is for mobilization. ठीक है? तो masses क्या करते हैं? masses आर्ट मूवी देखते हैं कि मसाला मूवी? मसाला मूवी. तो थोड़ा उसमें मसाला, थोड़ा उसमें इमेजिनेशन, ठीक है, थोड़ा झूठ, थोड़ा ऐसे बना के तब जाके मासेस. ठीक है. तो मासेस विल गो. इसीलिए मूवीज में कौन सी मूवीज हिट होते हैं? जिसमें सच कम झूठ ज्यादा. ठीक है. क्योंकि मासेस वरना घर से नहीं निकलेंगे अगर उन्हें रियलिस्टिक मूवीज दिखाओगे, जिसको सो कॉल्ड आर्ट मूवीज कहते हैं. तो वो तो सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स के लिए हैं, लेकिन आर्ट मूवीज से कभी बॉक्स ऑफिस हिट थोड़ी होगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो मासेस के लिए जब सिंप्लीफाई कर दिया जाता है और उनके लेवल पे लिया जाता है आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ठीक है. तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज politicization of philosophy. Its purpose is for mobilization of people. Have you written that? तो ऐसे लिखो. लिखो political ideology is used for mobilization of people. So these are some interrelated terms.
Gradually you will understand it. So now we will start with Western political thought. चलिए अब लिखिए फिर से Western political thought. So you know why to study. Why to study thought? It forms the language of the subject. ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखो why to study thought. ये to understand language of the subject. So now the next question is from where to study thought. From where to study thought. Political thought कहाँ पढ़ेंगे आप? कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास में पढ़ रहे हैं. किसके क्लास में पढ़ रहे हैं? तो यही क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? कहाँ? Where to study the political thought? There is only one place. Okay, you should know what you are doing. तो आप तो ये आंसर दे सकते हैं ना, where to study the political thought. Okay, so where to study the political thought? You study political thought from the works, लिखना नहीं है, पहले समझना है, from the works of the prominent persons in political science like Plato, Aristotle, J.S. Mill and all. Fine. So which book of Plato do we study in political thought? Republic. Fine. So Plato has written only one book? No. Plato has written many books. Okay. But why Republic? Because Plato's Republic is a classic. Okay. So from where do we study political thought? So you should say the political thought is based on the study of classics. ठीक है, तो कहाँ से पढ़ते हैं? क्लासिक्स से पढ़ते हैं. ठीक है, फ्रॉम वेयर टू स्टडी पॉलिटिकल थॉट. इसका आंसर लिखे क्लासिक्स. ठीक है, तो व्हाट इज क्लासिक? ठीक है, लिखिए, देखिए व्हाट इज क्लासिक. इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन लिखिए. लिखिए व्हाई only a particular book of a particular thinker is known as classic. ठीक, तो व्हाट इज क्लासिक? क्लासिक अंडरलाइन करो. ठीक है, आप कब कहते हो ये क्लासिक है? है, आपको कोई क्लासिक पता है? कोई क्लासिक मूवी पता है? कौन सी? इज टाइटैनिक क्लासिक? इज मुगले आजम क्लासिक? व्हाट इज क्लासिक? Why do you call? Why you use the word but you don't understand the meaning? Huh? It surpasses the time. It surpasses the time. Very good. तो क्लासिक का मतलब है ये हेरिटेज है. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंस इज, लिखो नहीं, समझने की कोशिश करो, इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. इज रामायण क्लासिक?
यस, बाइबल क्लासिक, ठीक है। सो समथिंग बिकम्स क्लासिक means something, the relevance is beyond time and space, okay, eternal. You can watch that movie again and again. You go back to it. You want to know your heritage. Fine, it is a classic. Fine. So classic means class apart. ठीक है, it is different from the lot. It has a class of its own. It is a class apart. ठीक है, उसकी बात ही कुछ और है. That is a classic. Is that clear? So if something is classic, it is a class apart. It doesn't happen every day. क्लासिक मूवी या तो कभी कभी आती है, डेली हर साल कोई बना लेगा, नहीं बना पाएगा. ठीक है, तो अगर कोई चीज बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, देन इट हैज टू बी प्रिजर्व्ड. ठीक है, एंड बिकॉज इट इज प्रिजर्व्ड, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. ठीक है, तो व्हाई सर्टेन बुक्स आर classics, political classics. Why do you use the political works? Why in 21st century we are studying Plato's Republic? Because Plato's Republic and the ideas which it has a relevance even today. Okay, so why we study not just a tribute to Plato, but because of its relevance. Fine. So there are two types of books. One is the textbook, another is a reference book. Okay. So you refer Plato's Republic. So even for solving the many problems of our times, many political issues of our time, we refer these books again and again. These books are preserved. Fine, because of the depth of the knowledge. The books written long time back, but they hold importance even today. क्या समझ में आया कि क्लासिक किसे कहेंगे? जिसकी बात ही कुछ और है. ठीक है, means which is a class in itself. So something is a class in itself means it needs to be protected. उसको आप, it is a heritage of the humanity. So Plato's Republic is studied across the countries, and surprising is it was written in ancient Greece to solve the problems of ancient Greece, but it has ideas which have relevance even today. Fine. So something gets the status of classic because of the depth. So if certain buildings which are there in with us since ancient time, they are classics, they need to be preserved. Fine, they need to be referred. They let us know about who are we, what is our identity. Fine, so something gets the status of classic if it is class apart. And what makes a political work classic? If the ideas related to politics are useful even for understanding and solving the problems of our times also. आ गया समझ में क्लासिक्स? इन शॉर्ट, सिंपलेस्ट अगर एक वर्ड में बोलना है तो रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं. Is that clear? So you refer them again and again. Is Gita a classic? ठीक है. So what you are going to refer again and again is a classic. ठीक है. And why it has the status? Because of the depth of the ideas. So Plato is not an ordinary philosopher.
Plato is not the only philosopher of his time. There were many philosophers, but we study Plato only, and we don't study all works of Plato. We study only Plato's Republic because Republic is a classic. ठीक है? तो what is a classic? ठीक है, लिखे, देखो, the term classic denotes something which is exclusive. That is a class apart. इसकी बात ही कुछ और, बाई लेवल कुछ और है, क्लास अपार्ट है वो. इज दैट क्लियर? आप लिखो, राइट, ऐसे लिखो, व्हाट मेक्स अ वर्क क्लासिक? इज द डेप्थ ऑफ द आइडियाज. तो जितना प्लेटो को पॉलिटिक्स की समझ है उतना बाकियों को नहीं है. डेप्थ ऑफ द आइडियाज. कोई बिल्डिंग आज भी खड़ी हुई है एंशियंट टाइम, मतलब उसकी नींव कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, कितनी डेप्थ है उसकी. इज दैट क्लियर? तो इट इज नोन फॉर द डेप्थ ऑफ आइडियाज, मीन्स द रेलिवेंस ऑफ द वर्क इवन फॉर आवर टाइम्स. इसका मतलब है क्लासिक्स आर टाइमलेस, टाइमलेस वर्क्स. What makes them timeless? The depth, the quality. ठीक है, तो अब लिख सकते हैं classics can be called as a reference books. So why to study political thought? To build the base. From where to study? Classics. Now another $1 million question. Okay, is it easy to understand classics? लिखो question. Is it easy to understand classics? ठीक है, तुम्हारे लिए रेफरेंस बुक्स पढ़ना आसान है. तुम लोगों से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती. तुम क्लासिक्स पढ़ लोगे, प्लेटो का रिपब्लिक, और पढ़ लेते तो यहाँ क्यों होते, खुद ही पढ़ लेते. ठीक है, अच्छा किया प्लेटो ने बड़ा मुश्किल से लिखा, कम से कम हम लोग का तो काम चल रहा है. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोग एनसीईआरटी भी खुद से नहीं पढ़ पाते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, is it easy to understand classics? Simple answer लिखो, no. Why? Because we are very superficial people. Fine, for us information is knowledge, and the moment something is deep, something is dense, something contains lot of knowledge, your mind starts surrendering. Fine, it is not everybody's cup of tea. So who can study classics? Those who are specialists in the field. Is that clear? And it needs lot of patience. To develop knowledge, you need lot of patience. Is that clear? So it is not possible for all of us to study classics. Why? Because they are classics. Okay? And because they are classics means the depth of their ideas. ठीक है, तो why you can't study classics? Because you are superficial. Your knowledge is superficial. फेक है. 10th 12th में कोई पढ़ाई नहीं की, सीबीएसई वालों ने मार्क्स ऐसे भर भर के दे दिए.
ठीक है, वरना एनसीईआरटी की क्या जरूरत पड़ती है पढ़ने की। ठीक है, और एनसीईआरटी नहीं होता, अगर एनसीईआरटी हो जाए तो यूपीएससी हो जाए। इज दैट क्लियर? सो व्हाई यू कांट स्टडी क्लासिक्स? क्या बोलोगे अपने बारे में? बिकॉज यू डोंट हैव अ फाउंडेशन, you don't have a good base. Okay, because our schools don't build the base, they don't build our concepts. Indian education system is based on marks and mugging up the things, not understanding the things. We don't have that culture. Anyway, why it is difficult to study classics? The problem are many, not one. Fine. तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी क्लासिक्स। क्या है आंसर? देखो, बिकॉज दे आर क्लासिक्स। अगर हर टॉम डिक एंड हैरी को समझ में आने लग जाए तो वो क्लासिक नहीं है फिर। ठीक है, देखो, बिकॉज जैसे राज कपूर मूवी मेरा नाम जोकर, ठीक है, सो इट इज अ मूवी विच एवरीबडी कुड नॉट अंडरस्टैंड. That was the most saddest part for him, because that movie is full of very in-depth philosophy, so people don't like it. Okay, so people like the movies which have no depth, only item number. Fine, you don't like those movies, है ना? तुम्हें मूवीज में क्या चाहिए होता है? आइटम नंबर. जो आइटम वाले लोग हैं वो खुद आइटम है. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आइटम वाले लोग क्लासिक्स कैसे पढ़ सकते हैं? और डू वी हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग? फाइन, सो रीडिंग इज नॉट इजी थिंग, यू नीड concentration. So this generation is so much distracted, there is so much for your distraction, you don't have that capacity to understand classic. So why can't you study classic? The simple reason is because classic is classic and we are fake people. ठीक है, तो classic is classic का मतलब क्या हुआ? लिखो, because of the depth of the ideas. देखो, if we have superficial knowledge, we cannot approach classics. भाई प्लेटो ने लिखा है, ठीक है, कोई नाम है उस इंसान का, ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ लेंगे? आप क्या गीता पढ़ लेंगे कि कुरान पढ़ लेंगे कि क्या पढ़ लेंगे? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे. आपको हर जगह कोई टीचर लगता है. इज दैट क्लियर? तो भाई उसमें इतना सारा डेप्थ है, तो इट इज नॉट सो इजी. तो क्लासिक से डाइल्यूटेड फॉर्म में फिर सिंपल बुक्स बनाई जाती हैं. इज दैट क्लियर? तो क्लासिक्स आर नॉट इजी, but it is essential. Fine. So now there are many other problems. Fine. So what are other problems when you study classics? तो इसमें लिखते हैं, देखो, right, it is all the more difficult to study classics in the field of political science. पॉलिटिकल वर्क्स पढ़ना और मुश्किल काम है. ठीक है, आप लिखो वाई. बिकॉज पॉलिटिक्स हर इंसान नहीं समझ सकता, यू हैव टू बी वेरी वाइज. ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्क्स को समझना और मुश्किल है. हर इंसान पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकता है. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कोई ज्योग्राफी नहीं है कि अपना कहाँ कौन मिनरल है और याद करते बैठ रहे हैं. ठीक है, इट रिक्वायर्स योर थॉट प्रोसेस. तो बाकी क्लासिक्स पढ़ भी लोगे, टोलेमीज ज्योग्राफी पढ़ लोगे, लेकिन
पॉलिटिकल टेक्स्ट नहीं पढ़े जा सकते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ट्रुथ टू पावर. ठीक है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रुथ टू पावर. व्हाट इज ट्रुथ टू पावर? पहले समझना है. द पॉलिटिकल टेक्स्ट try to explain the politics. Fine. So political texts are the commentaries on the politicians. Politicians means man in power. Okay. So it is a very risky thing to write about politics, because you may write something which the men in power will not appreciate. Fine. So it is full of risk. क्या है? Truth to power. Politics is about power. Power क्या है? जो पावर में होता है उसके साथ क्या होता है? Power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. तो पावर के बारे में अगर आपको लिखना है तो करप्शन के अलावा कुछ लिख पाएंगे आप? पॉलिटिक्स में करप्शन के अलावा कुछ है? कुछ देखा है आपने? नहीं. तो अब कोई भी थिंकर जब लिखता है तो वो पर्सन्स इन पावर के ऊपर लिखता है. तो जो पर्सन्स इन पावर हैं वो तो कहते हैं कि दे आर डूइंग एथिक्स, बट रियलिटी क्या होती है? दे आर डूइंग करप्शन. अब मैन इन पावर को आप बोल पाएंगे कि यू आर करप्ट? बोलेंगे? ठीक है, क्या करेगा वो? गिलोटिन. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है. तो हु इज सॉक्रेटिस? You know the story of Socrates? So Socrates is known as the first martyr of philosophy. ठीक है? Who died for philosophy, who got killed because he was telling the truth. तो अब Socrates की लाइफ को देखने के बाद all political thinkers, they understand that writing truth about politics is a risky thing. ठीक है? So how to write? So you can't write directly. So you have to write very indirectly. So in these works, the scholars have not written directly. क्योंकि डायरेक्टली जिस दिन लिखोगे उसी दिन तुम जेल में पहुंचोगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, Socrates had to drink the poison. Fine. This shows that if you will speak the truth, you will have to drink poison. If you believe in truth, like Gandhi, if you want to do good for the people like Christ, what will happen to you? You are gone. Fine. So पॉलिटिकल साइंस में पंगा बहुत बड़े लोगों से है. ठीक है? अब जो इंटेलेक्चुअल है वो तो सच बोलने बैठा है, लेकिन फिजिक्स वाला तो बोल देगा एल नीनो हो रहा है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है. लेकिन अगर पॉलिटिकल स्कॉलर बोलेगा भाई करप्शन हो रहा है, तब प्रॉब्लम होगी. ठीक है? लेकिन इंटेलेक्चुअल का दिल है, मानता थोड़ी है, वो भी बोलेंगे. तो कैसे बोलेंगे? डायरेक्टली बोलेंगे कि इनडायरेक्टली बोलेंगे? इनडायरेक्टली बोलेंगे. ठीक है? तो इसलिए आपके अंदर ये समझ होनी पड़ेगी कि भाई आखिर उसने बोला क्या. एंड इट इज नॉट सो इजी. तो पॉलिटिकल टेक्स्ट्स आर रिटन in the language that
it is not so easy to deconstruct because the political scholars are playing safe, because they are they are writing commentary on the persons in power. तो इसी को कह रहे हैं, एक पावर में होने वाले इंसान के साथ आप सच बोलिए तो आपकी जगह कहां होगी? जेल में। तो इसलिए ऐसे लिखा गया है जिसमें बहुत इनडायरेक्ट लिखा गया है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, you need lot of wisdom to understand. Fine. So what is political analysis? Political analysis is not reading, not understanding what is said, but what is not said. थिंकर ने जो बोला है उससे अपना काम ही नहीं है, थिंकर ने जो नहीं बोला है वो पढ़ना है। होगा तुमसे? ठीक है। तो पॉलिटिकल एनालिसिस मीन्स रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइनों के बीच में जो बात है वो पढ़नी है आपको। तो जो लिखा नहीं है वो पढ़ना है, और जो लिखा है वो डायरेक्टली लिखा नहीं है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इसलिए क्या कहा है, रीड द साइलेंसेस means something which thinker wants to tell rather than what thinker has told. जो उसने बोला है वो तो सुनना ही नहीं है, ठीक है, जो उसने नहीं बोला है वो समझना है। तो है थोड़ा मुश्किल काम। अगर आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स समझने चालू करेंगे जिसने जो बोला और उस पर विश्वास करना चालू कर दिया तो आप पॉलिटिक्स समझे नहीं। तो जो सब बोलने के बाद जो बचता है वो है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते। सो इट्स अ रिस्की टास्क। फाइन, यू आर चैलेंजिंग द मैन इन पावर। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना भी कोई आसान काम नहीं, ठीक है, हम जान पे खेल के पढ़ा रहे हैं तुम लोग, क्योंकि हम तो प्लेटो की बात पढ़ा रहे हैं, लोग समझने लगते हैं हम बता रहे हैं, ठीक है, मेरा और इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो वो बोल रहा है, बट बिकॉज आई एम स्पीकिंग पीपल थिंक इट इज योर व्यू, यू आर दिस दैट। इज दैट क्लियर? सो यू आर नाउ in a risky business. I am in a risky business. You are also entering into a risky world. Fine. And here you don't have to speak the truth. That is why I said that those who are in power don't answer their question, only appreciate their question. Art of interview of UPSC यही है, आंसर देने बैठोगे उनका जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगा। ये इंसान मुझे आंसर दे रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन अप्रिशिएट करते जाना है। व्हाट अ क्वेश्चन सर जी, व्हाट अ क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, यू मस्ट बी अ वेरी ग्रेट ऑफिसर, ऐसे बोलना है उसको। इज दैट क्लियर? तो यू शुड बी स्मार्ट। अब तो आया समझ में ट्रुथ टू पावर। तो पॉलिटिकल साइंस की किताबें समझ में नहीं आएंगी, क्यों? दे आर नॉट रिटन डायरेक्टली, बिकॉज दे आर क्रिटिक ऑन द पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज बैड। सो द स्कॉलर्स लाइक they have used coded language. So you need to learn decoding. You need to learn what actually the scholar wants to say rather than what he is saying. ठीक है? That makes it problem. ठीक है? Truth to power ऐसे लिखो. Right? Since political works are commentaries on persons in power, comma, the fate of Socrates
reminds the danger of speaking the truth to power. The fate of Socrates, fate, F-A-T-E, fate. क्या हुआ है? You are laughing. पूरा बताना है. Since political thought is a commentary on the persons in power, ठीक है, comma, hence it is a dangerous business. It's a risky thing. It's a dangerous business. लिखो कॉमा करके. The fate of Socrates reminds us the dangers. Hence, political philosophers use coded language. ठीक है, एरो करके लिखो कोडेड लैंग्वेज. इट मेक द टास्क मोर डिफिकल्ट. ठीक है, अब लिखो इट इज सेड दैट पॉलिटिकल एनालिसिस इज reading between the lines. अंडरलाइन को रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब रीड द साइलेंसेस. तो इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, सब उल्टा सीधा है. ठीक है, इसलिए बहुत समझदारी से कदम रखने पड़ते हैं. फाइन. तो पॉलिटिकल वर्क आर डिफिकल्ट टू डीकंस्ट्रक्ट because of the problem of truth to power. Is that clear? So now what else is the problem? And that is the problem with other works also, is that ऐसे लिखो, right, the other problem in understanding the classics is the language. ठीक है, तो language creates problem. We can express the truth only through language. ठीक है, तो हमारा लैंग्वेज पर जितना कमांड उतना अच्छा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमारी अगर लैंग्वेज ही डेवलप नहीं है तो हम ट्रुथ को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं. ट्रुथ इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. एंड परहैप्स many of you have not understood the role of a language in the human world. So truth is a expression of language. ठीक है, तो किसी भी चीज, हाउ मच the extent to which our language is developed, only to that extent we can understand the truth. So human language, is it developed or undeveloped? Undeveloped. Fine. So the amount of the ideas or the emotions that come to our mind, do we have language to express that? नहीं. तो हम अपने माइंड में जो भी चीजें हैं उसका 1% भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी डोंट हैव अ लैंग्वेज. The speed with which ideas come to us
with same speed human language has not developed. You understanding this? This means that the scholars, whatever they wanted to write, they could write. प्लेटो जो लिखना चाहता था वो पूरा लिख पाया? उसके पास लैंग्वेज थी? नहीं थी। तो तब तो और कम थी लैंग्वेज। तो हमें प्लेटो को समझना बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? बिकॉज प्लेटो could not, no one can actually express everything that comes to your mind. ठीक है? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं, कुछ लोगों के पास लैंग्वेज है, दे कैन यूज वेरी एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस कि sometimes we work with some workable vocabulary, but if you can use precise words, you can communicate the meanings more clearly. So the big question, another $1 million question, is whether Plato could write what he wanted to write. No. Plus, can we understand what Plato has written? No, because we don't have, like, language has evolved over a period of time. Okay, so maybe at the time of Plato, the words had a different meaning, and we are completely unaware of those meanings. जैसे आज के टाइम में we do not know what exactly the term jati meant in India. We don't know what does the term dharma meant in India. Fine. So we use these terms according to the modern concepts, and we may end up in a wrong understanding. तो second problem क्या है? Problem of language and human language. Why language is important? Because language is the means to express. We can express the truth to the extent we have language to express it. So language is the medium to express the truth. फाइन. अगर आपके पास लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो क्या आप आंसर लिख पाएंगे? क्योंकि आपको वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे. इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. लैंग्वेज चेंज होती रहती है. टुडे देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच वे आर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ प्लेटो. प्लेटो के टाइम में ब्रो नहीं था, प्लेटो के टाइम में चिल नहीं था, वरना प्लेटो भी चिल कर रहा होता है ना. तो आज के टाइम में प्लेटो ने चिल लिखा तो हमारा चिल और उसका चिल एक नहीं है. तो कभी कभी क्या होता है, हम आज के मीनिंग से तब के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. हम कहते हैं कि भाई प्लेटो ने ये क्या लिखा है. तो whenever you study Plato, can you actually understand what Plato is saying? Do you understand what I am speaking? No. Can two humans understand each other? No. ठीक है? Between two humans, what is possible? Misunderstanding. ठीक है? दो इंसानों के बीच सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती. क्योंकि कैसे होगी अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? बिकॉज यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस. maybe those who cannot speak may understand more than those who speak. क्योंकि हम दो लोग एक दूसरे को कैसे जान रहे हैं? थ्रू द लैंग्वेज. ओके, बट देयर इज लॉट ऑफ difficulty in understanding language. Language is a problem. हमेशा what I say, I have to explain. I mean to say this. I mean to say this. Fine. So suppose if I have seen a brown dog
and I come in the class and tell you that I have seen a brown dog, are you exactly understanding what I am saying? Is the image of dog is same in your mind and my mind? No. So brown means which brown? Even if I say dark brown, but is your dark brown and my dark brown same? So can we ever understand each other? No. We can only misunderstand each other. Why we misunderstand? Because we don't have a language. Fine, we don't understand. Our backgrounds are different. Our languages are different. We don't understand each other. Is that clear? तो जब हम प्लेटो पढ़ते हैं तो पहली प्रॉब्लम ये है, प्लेटो कुड नॉट राइट व्हाट ही वांटेड टू राइट. ठीक है. सेकंड है, we could not understand what Plato wanted to say. So ultimately, are we going to understand Plato, or we are going to misunderstand Plato? So this misunderstanding we are calling understanding. किसको आप अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग को. तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग प्लेटो. And actually you are not studying Plato. ठीक है, you are studying me, because I am narrator of Plato. Fine, I am narrating Plato to you. So I am not giving you any guarantee that I will be telling exactly what Plato meant. So what I will tell? I will tell my understanding of Plato. I am assuming that Plato said this. So I will be telling my story of Plato. तो इस क्लास में कुछ सच नहीं मिलने वाला है. ये सोच के नहीं आओ कि मैम सच में प्लेटो पढ़ा रही. ठीक है, हम आपको प्लेटो की एक स्टोरी सुना रहे हैं और आपके लिए हम ही प्लेटो हैं. इज दैट क्लियर? तो हम जो बोल रहे हैं, हमें जितना समझ में आ रहा है, ये सब मेरा नरेशन है प्लेटो का. आई एम नरेटिंग प्लेटो. ठीक है. तो कैन the two teachers, Plato is one, but can the two teachers explain Plato equally? No. It also depends upon the background knowledge. Fine. So lot of variation will come when two persons will study Plato. There will be less variation when two persons will explain the physical phenomena. But there will be more confusion when two persons will teach same thinker, because every person will be interpreting according to that person's initial knowledge base, according to that person's understanding of Plato. ठीक है. So who has written Republic? I have written. ठीक है. प्लेटो का ऑथर कौन है? वो वाला प्लेटो, जो वो वाली रिपब्लिक जो आप यहां पढ़ेंगे, उसका ऑथर कौन है? मैं हूं. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हु राइट्स द टेक्स्ट इज नेवर इन द कंट्रोल ऑफ द ऑथर. टेक्स्ट इज ऑलवेज रिटन बाय, या टेक्स्ट इज कंट्रोल्ड बाय द रीडर. रीडर इज द रियल ऑथर. ठीक है. तो सबसे पहली बात, प्लेटो ने कुछ बोला और हमने कुछ समझा. ठीक है. फिर हम कुछ समझ के आपको समझा रहे हैं. तो क्या सारे लोग सेम समझ रहे हैं? कितने प्लेटो हैं? जितने स्टूडेंट्स हैं उतने प्लेटो हैं. ठीक है. एक ही क्लास है लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है. ओके. So there is not one Plato, and after studying Plato, we will understand only one thing, that we have understood nothing. ठीक है. तो मेरे क्लास में फाइनली आपको समझ में यही आएगा कि कुछ समझ नहीं आया,
और इसीलिए आप यहाँ आए हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सॉक्रेटिस सेज, एंड सॉक्रेटिस इज अ वाइजेस्ट मैन बिकॉज ही एक्सेप्ट दैट आई नो नथिंग। हम भी तुमको बता रहे हैं आई नो नथिंग, ठीक है। हम प्लेटो की सुनाएंगे आपको स्टोरी, तुम्हें पसंद आए, कोई जरूरी थोड़ी कि तुम कहो यही प्लेटो ने कहा है। हम तो कह रहे नहीं कहा है, मैंने कहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको हमारी ही स्टोरी के साथ जाना है, वॉट आई हैव अंडरस्टूड, और जो हम समझाएंगे वो आप तक जाते जाते बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। हर एक स्टेप पर प्लेटो इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। इवन फिजिकल वर्ल्ड इज वेरी सब्जेक्टिव, known as theory of relativity. Physical phenomena is also not observed by everybody in a similar manner. It depends upon the time and space. So from like where are you sitting that matters, ठीक है। तो हमारी आवाज बाद में, पीछे बाद में जा रही है, इधर वाले लोगों को कुछ और समझ में आ रहा है, इधर वाले लोगों को कुछ और समझ में आ रहा है। बस यही समझना है कि समझ कुछ आना नहीं है, 2.5 घंटा आना है, ठीक है, टाइम काटना है और जाना है, ठीक है। यही इस क्लास का मोटो है, ओके। तो चला जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो क्या पढ़ा आपने, क्या लिखा? व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स? तो अदर प्रॉब्लम में लिखो लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। लैंग्वेज क्रिएट्स द प्रॉब्लम। सो व्हाट प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज? फर्स्ट प्रॉब्लम, ह्यूमन लैंग्वेज is not developed, right? We can say that perhaps Plato could not write whatever he wanted to write, ठीक है, ठीक है। ऐसे देखो, he may not have proper words, he may not have proper words, वो अपनी बात कह ही नहीं पाया होगा। कोई इंसान अपनी बात नहीं कह पाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? The second point is language is evolving, right? It is not necessary that the way in which we use the words is exactly the way in which Plato had used the word. Plato has used, because meanings बदलते जा रहे हैं, ठीक है। अब लिखो hence there is very high probability of getting things wrong rather than right. So there is one scholar we will study later, right? Derrida has rightly said that. Derrida has rightly said that point number 1,
the text is never in the control of author. जैसे तुम नहीं कहते हो दोस्त से, मैंने क्या कहा तुमने क्या बना दिया, ठीक है, तुम उसको दोबारा एक्सप्लेन करते हो, नो नो व्हाई आर यू गेटिंग हर्ट, आई डिडंट मीन दिस, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी बात कोई समझ पाए। इज दैट क्लियर? तो यही पहली चीज क्या लिखा है आपने फर्स्ट सेंटेंस? हाँ, टेक्स्ट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ऑथर, कॉमा, इट इज इन द कंट्रोल ऑफ रीडर। हमने क्या बताया, आपने क्या समझा, ये बड़ा मुश्किल है, इसीलिए टास्क ऑफ अ टीचर इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, लिखो देयर कैन बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टेक्स्ट, मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट। जैसे किसी को प्लेटो वो लगेगा अच्छा इंसान, किसी को खराब इंसान, सब अपनी अपनी बातें करेंगे प्लेटो को लेकर। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, अकॉर्डिंग टू डेरिडा any understanding is basically misunderstanding. You can always question your understandings. ठीक है, तो let us start misunderstanding Plato. ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको सही सही बता पाए या बता पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो इज इट इजी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट? एक और चीज लिखो, लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड अ टेक्स्ट? क्या रोहित सर लो, हाँ, बुक और टेक्स्ट में डिफरेंस समझते हैं? बुक पढ़ते हैं कि टेक्स्ट पढ़ते हैं? क्या डिफरेंस? जो बुक नहीं पढ़ी जाती, बुक को अब टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट में रिटन पार्ट भी आता है और अनरिटन पार्ट भी आता है। इज दैट क्लियर? तो बुक इज अ वेरी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। बुक का मतलब है स्टडीइंग एग्जैक्टली व्हाट ऑथर इज टेलिंग। अब वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम पढ़ते हैं? डू वी स्टडी बुक और वी स्टडी टेक्स्ट? टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट में क्या पार्ट है? अनरिटन पार्ट भी है। जब हम केवल रिटन पढ़ रहे हैं तो बुक है, और जब हम अनरिटन पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट है। रिटन अनरिटन साइलेंस, तो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? और टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट बुक, बुक मीन्स authority of the author, but when you study the text there is no authority, then reader is the king. Okay, so now the fashion has changed, the tradition has changed. We don't study books, we study text. Is that clear? So this word is also, like Gandhi said, if you want to learn from the book of life. तो बुक ऑफ लाइफ में तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं? टेक्स्ट पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर?
तो क्या पढ़ना चाहिए? टेक्स्ट का मतलब, टेक्स्ट इज गिविंग प्राइमेसी टू रीडर. Text means there is lot of things which are unsaid. Is that clear? And book is a very outdated concept. So that is why I am using the term text. क्या पढ़ना है? बुक की टेक्स्ट. टेक्स्ट. तो शाहरुख खान क्या कहता है? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, है ना? कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है. तो क्या पढ़ना है? चेहरा पढ़ना है, किताबें नहीं पढ़नी है. ठीक है? तो असली नॉलेज कहाँ से आती है? चेहरा पढ़ के. ठीक है? इसीलिए तुम लोग बुक नहीं पढ़ते हो, है ना? बुक तो रख देते हो और चेहरा पढ़ने में लगे हुए हो. ठीक है? तो नॉलेज वही है, हम चेहरा पढ़ रहे हैं. वॉट अ पर्सन इज स्पीकिंग इज लेस इंपॉर्टेंट. वॉट एक्सप्रेशंस आर कमिंग ऑन द फेस इज मोर इंपॉर्टेंट. फाइन. So we speak language for what? To hide or to reveal? To hide the truth. तो इसलिए किताब नहीं पढ़नी. क्या पढ़ना है? चेहरा पढ़ना है. ठीक है? घर में बोल देना, मैम ने कहा है कि अब चेहरा पढ़ना है. अब चेहरा पढ़ने के लिए पैसा लगता है, स्टारबक्स जाना पड़ता है. ठीक है? तो अगर आपको मुझे आईएएस बनाना है तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा बजट लगेगा. क्यों? क्योंकि चेहरा पढ़ना है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड अ टेक्स्ट. क्या लिखा आपने? क्या लिखा है क्वेश्चन? व्हाट इज अ डिफरेंस? ठीक है? तो बुक का मतलब है, बुक मीन्स अथॉरिटी ऑफ ऑथर. टेक्स्ट मीन्स primacy of reader. Text includes unwritten parts. तो एक तो प्लेटो ने लिखा, फिर क्या नहीं लिखा वो भी पढ़ना है, फिर सपने में प्लेटो का चेहरा सोचना है, बहुत सारे काम करने हैं, तब जाके प्लेटो समझ में आने वाला है. तो इज इट इजी टू स्टडी द टेक्स्ट? नो. ठीक है? तो इसलिए लिखो, राइट, द टेक्निक टू स्टडी टेक्स्ट इज कॉल्ड हर्मेन्यूटिक्स. इस टेक्निक को कहते हैं हर्मेन्यूटिक्स. हर्मेन्यूटिक्स मीन्स आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन या टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन. हर्मेनॉटिक्स वर्ड कहां से आया? फ्रॉम हर्मिस. ऐसे देखो, हर्मिस. हर्मिस इज अ माइथोलॉजिकल फिगर. ठीक है? लिखो, ही इज सीन एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड. गॉड कीप्स ऑन सेंडिंग अस मैसेजेस. गॉड हमारी जिंदगी में मैसेजेस भेजता है कि नहीं भेजता? लेकिन क्या आप उस मैसेज को समझ पाते हैं? बहुत कम लोग. तो कुछ ही लोगों ने गॉड का मैसेज समझा. इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी क्राइस्ट, इट कैन बी सम पीपल, नॉट एवरीबडी. ठीक है? तो गॉड क्या है? ट्रुथ. एंड व्हाट दीज क्लासिक्स हैव? विजडम. ठीक है? तो गॉड का मैसेज आप समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते. ठीक है? क्यों नहीं समझ पाते? बिकॉज गॉड सेंड द मैसेज इन अ कोडेड लैंग्वेज. गॉड सीधे सीधे कोई बात करते हैं? घुमा फिरा के. अरे कोई सीख ही देनी, डायरेक्ट दे सकते हैं, पर्ची गिरा दें. गॉड के लिए तो सब कुछ संभव है.
लेकिन गॉड पहले हम लोग को गिराएंगे, फिर चोट लगाएंगे, फिर हमको समझाएंगे। इज दैट क्लियर? तो गॉड की प्रोसेस कैसी है? काफी लंबी प्रोसेस है। तो हरमेनॉटिक्स है, मतलब हरमीस इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड हु ब्रिंग्स गॉड्स मैसेजेस टू अस, बट गॉड्स मैसेजेस आर इन कोडेड लैंग्वेज। गॉड प्लेज गेम विद अस, ठीक है? और गॉड मजे लेते हैं जब हम लोग गिरते हैं। इधर शिव जी पार्वती के साथ मजे लेते हैं, देखो इस इंसान को, ये इंसान नहीं समझा, बेवकूफों जैसे काम कर रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो व्हाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड? इट इज डिफिकल्ट टू डिकोड। फाइन। So similarly, where is the message of God in these classics? And it is difficult to understand the message of God. ठीक है? तो इसलिए चूंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत हाई लेवल की कोडिंग स्किल हो तब जाके हम समझ पाएंगे। ठीक है? तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हर्मेनॉटिक्स। आज कुछ समझ में आया आपके? यू आर मिसअंडरस्टूड द लेक्चर? मिसअंडरस्टूड वेल? ठीक है? तो व्हाट आर द मेन थीम्स दैट वी हैव स्टडीड? एक लिस्ट बनाओ और रिवीजन कैसे करना है, की टर्म्स और उसकी मीनिंग। इरादा तो नहीं बदल रहे हो पॉल साइंस? हाँ, ठीक है। क्या की टर्म्स हमने यूज किए? थॉट, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्लासिक्स, ट्रुथ टू पावर, हर्मेनॉटिक्स, और कोई वर्ड यूज किया? No. So if you can explain these words, you have understood. This is the revision you have to do every day. What keywords are there, and are you able to explain? This is the revision you should be doing. क्या करना है? आइए. Okay. So I hope you have misunderstood. आया आपको कुछ? है ना? कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है? So here Rohit sir is here. Rohit sir also takes certain portions of international relations. So he is here. You can meet him day after tomorrow, or like Satya sir will also be there. So whenever you have doubt, if I am not there, you can always contact them. You can solve your doubts. So Rohit sir will introduce himself, and if you have any doubt from the lecture, you can feel free to ask. Okay, thank you. Hi, good evening, everyone. So I hope this lecture was eye-opening for you. So I'm here for next 15-20 minutes. If you have any doubt regarding lecture or anything else, you can please approach the dais and you may ask your question. Okay? इसमें रेस्ट में डिस्पर्स, if आपको डाउट है आप आके पूछ सकते हो. Guys, exit is from the back gate. Okay. Exit is from the back gate. Those who have doubts, you can come here and ask your doubts. Thank you.